So, hello everyone. Welcome to the Engineers Career Group. Myself, Prasoon. And from last 5 to 6 years, I'm teaching for ISRO, GATE, DRDO, and other state and national level examination. And in this session, हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर, कैसे हम लिंक लिस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में, लिंक लिस्ट, सिंपली लिंक लिस्ट में हम नोड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो पहले अगर समझने की कोशिश करें तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है। किस तरह से लिंक लिस्ट को हम देखते हैं, किस तरह से उसके अंदर क्या कंटेंट होते हैं, पॉइंटर्स का क्या यूज है उसके अंदर। ठीक है। हाउ इट इज रेफरिंग टू अदर नोड। ठीक है। हाउ टू क्रिएट दैट नोड। So many options are there, so many prerequisite we need. ओके। तो prerequisite के लिए हम एक क्विक सेशन देखते हैं कि इसमें हम कैसे लिंक लिस्ट को समझ सकते हैं। ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पे लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, वी हैव a set of names. Let's say we have some names like Amit, like Roshan, like Rakesh. ठीक है। like Abhay, Bobby. So we have set of some names. Okay. So these names are what? Actually the data. These name are actually the data. And now इस डेटा को हमें कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम, तो वी कैन स्टोर इन सम डेटा स्ट्रक्चर। ओके। स्ट्रक्चर, इन दैट स्ट्रक्चर वी नीड टू स्टोर दैट डेटा। ठीक है। तो जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तो किस फॉर्म में स्टोर स्टोर करेंगे, तो वी हैव मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। सो सपोज मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है। स्टोर करना चाहता हूँ, और ये स्टोर मैं किस में करूंगा, लेट्स से एरे में करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सो एरे इज डिफाइंड बाय टू थिंग्स। वन इज वैल्यू एंड सेकंड वन इज व्हाट, इट्स इंडेक्स। सो दो चीज से एरे अपने आप को डिफाइन करता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज सम एड्रेस। ओके। so address, or based on the memory size, it is divided into, like, if it is 1000 then 1004। ठीक है। तो based on the representation of memory, हम क्या करते हैं, मेमोरी में प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस एड्रेस पे, दिस पर्टिकुलर इज व्हाट वी कॉल एज एड्रेस। एट दिस एड्रेस, if I say I have stored the Amit, okay, so what this address means what, अगर हम इस एड्रेस पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये कंटेंट मिलता है, अमित मिलता है। ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग एंड द एड्रेस शुड बी नोन। ओके। so where this address will be stored, in address will be stored in some case of pointer। okay, so pointer will be storing the address। so now अगर इसी डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि लाइक 1004 में, लेट्स से यहाँ पे रोशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे राकेश लिखा हुआ है। सो दिस these addresses recognize the structured way, like if we go to that particular address, हम जिस एड्रेस पे जाएं तो हमें वो डेटा मिल जाए। ठीक है। सिमिलरली लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वी नो लिंक लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। Linked list a combination of two things. First one is what? Data. Okay. And second one is what? The link part. The link part. And what do you mean by this link part? So this link will refer to some list. Okay. It is a kind of list. The list means what? It should connect to some other data also. Okay. So this link part will connect to some other. Okay. So this is connecting to this location. Now what is this link contain of? अगर हम इसकी बात करें तो ये लिंक क्या कंटेन करता है, तो कैन वी से दिस लिंक विल कंटेन दिस एड्रेस। यस। सो दिस इज 1000 if 1000 is accessing Amit। okay, so suppose data is written here, what, Amit, let's say Amit is written here। so we have to go to Roshan। okay, रोशन पे जाना है तो रोशन का कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो एड्रेस क्या है यहाँ पे रोशन का, 104। तो इन द लिंक पार्ट
Can we write here? Can we write here 1004? Yes, we can write 1004. And in the link place, we can write 1004. So what is this link part? The link is what? Address. Address given to the second node. Okay. So this together is considered as a node. इसको हम क्या कहते हैं? एक node कहते हैं. ठीक है? Now, coming to the formal definition. तो लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है? दो सेक्शन होते हैं. सबसे पहला क्या होता है? डेटा. और दूसरा क्या होता है हमारे पास? लिंक होता है. ठीक है. तो दिस डेटा इज व्हाट कंटेन्स द एक्चुअल डेटा. This data contains the actual data, and this link contains what? Address of the next node. Address of the next node. Okay. So it contains the address of the next node. So we can represent it linearly. Yes. हम कैसे कर सकते हैं? इसको linearly represent कर सकते हैं. My thinking is what? Like if we have to represent in a linear way, like say we have a list of numbers. Let's say 45, 10, 15, 22, 39. These are the numbers. And these numbers should be represented. अगर हमें इन सबको represent करना है किस form में? We have to represent in linked list form. Linked list form. So how do we represent? So definitely we can represent in array. Okay. So array also we can represent. Okay. But here we have to represent it what? In linked list. Okay. So linked list में हम कैसे represent करेंगे? So we know a node. Node contains what? Two things. First thing what? Data, and second one is what? Link. Okay. So this is a particular node. Okay. सो इस नोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन डेटास के लिए? तो सबसे पहला फर्स्ट डेटा इज व्हाट? 45. तो वी विल रिप्रेजेंट 45 एंड दिस डेटा विल बी असाइंड विद सम एड्रेस. ओके. हम कोडिंग पार्ट में भी आएंगे, तो पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स इसका क्या है. तो सबसे पहला लेट्स से हमने इसको एक एड्रेस असाइन कर दिया. दिस इज 1000 एड्रेस एंड हियर इफ आई असाइन 1004 दैट मींस व्हाट? इट इज अ एड्रेस ऑफ द next node. Okay. So where this 10 will be stored. Okay. And if I write here 1004 means what? It is pointing to this node. ठीक है. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, let's say here we write 1008 and we have pointed this next data item 15 और यहाँ पे हम एड्रेस उसका कंटेन करेंगे like 1008 here consider and यहाँ पे हम देंगे 1012. Okay. So next node 22. Okay. So 1012 will consist this what? Let's say 39 address. Okay. So 1016. Similarly, अगर हम यहाँ link list create करें, तो it is consisting what? The address. Okay. So 1016 and this is 39. Now, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 39 हमारा end है. Yes, it is end. So it is assigned this node part. This is node of 39. So there is a null. Null means what? No data item is referring to further. Okay. किसी भी आइटम को वो रेफर नहीं कर रहा है लिंक लिस्ट में. ठीक है. जब नहीं लिंक लिस्ट में रेफर करेगा तो हमें क्या मेंटेन करना है उसको? नल. ठीक है. So we have to create here what? Null. Okay. So null is assigned. Now अब मैं मेरा क्वेश्चन अगर इसमें जनरेट करें तो हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर लिस्ट इज स्टार्टिंग. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है? ठीक है. तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई. कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हम नल को देखें, अगर हम यहाँ पे नल को देखें, ठीक है, तो नल हमें क्या बता रहा है? दिस इज द एंड. ओके. लेकिन सिमिलरली अगर हमें स्टार्टिंग देखना है तो वी नीड समथिंग टू पॉइंट द स्टार्टिंग. ओके. So for that purpose, we can introduce a new head pointer. Now, what is this head? ठीक है. So head contains, it is a pointer which contains the address of the first. Okay. So we can say this head is a pointer. इसको हम क्या कह सकते हैं? एक पॉइंटर जो पॉइंट करेगा हमें पहले नोड पे. ठीक है. So student, this is the representation of what? Linked list. Linked list को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. Now, here cases can be arise. लाइक हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं मिडिल में, लास्ट में, एट स्टार्टिंग पोजीशन, एवरीथिंग, एवरी केसेस विल अराइज, सो मेनी केसेस विल अराइज. बट बिफोर दैट वी नीड टू
define these things. So here, this is also a pointer. Okay. So this is also a pointer which is pointing to this. Okay. So this is also a pointer which is pointing to this. So this is also a pointer which is pointing to this. Okay. Similarly, this is also a pointer, or this is pointing to this. Okay. So this is what pointer plus the data item. दो चीज हमारे पास होती है, pointer that stores the address. Okay. So always remember, pointer will store the address. Okay. It will store the address. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट द नोड. ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ द नोड, सबसे पहला क्या होगा, हमें क्रिएट करना होगा पहला. ठीक है. फर्स्ट नोड. ओके. सो हाउ टू क्रिएट दैट फर्स्ट नोड. ओके. सो दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, पहले उसका एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एक देना होगा कि कहाँ से वो चीज स्टार्ट हो रही है. ठीक है. तो वो चीज स्टार्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हमें नोड क्रिएट करना है तो वी हैव टू go through some syntax. Okay, so what is that syntax? What is that syntax? तो syntax अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, we we are creating one structure. So this is what for structure. Can we say this is a structure? Yes, this node is complete a structure. ये अगर एक पूरा structure है तो we have to define something. Yes. So यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहला struct is a, like it is a representation of some structure. Okay. So struct node. Okay. हम क्या कर रहे हैं, नोड कर रहे हैं. तो बेसिक सिंटेक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, struct node, and in that node what we are containing, what we are containing, we are containing some data. ओके. सो यहाँ पे अगर नोड की बात करें तो नोड हमारे पास क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक डेटा, और दूसरा क्या कंटेन कर रहा है, लिंक कंटेन कर रहा है. सो हमें क्या डिफाइन करना है, दो चीज, एक डेटा और दूसरा क्या, link. Okay. So we know data is of what? Can we say this is an integer data type? यहाँ पे क्या है, integer data type? Yes. So यहाँ पे हम integer data type को हम कैसे represent करेंगे? So define the data type here int. So we can write here in place of int what? Data type. Okay. And the member one. The member one means what? The first item. Okay. So data type member one. Okay, member one is what? Here 45 is there. Okay, so data type and member. Okay, the actual data. So here we can write here data as also. Okay, so ये हमारा क्या हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया. नाउ दूसरी चीज क्या है, अब ये पॉइंटर को हमें रिप्रेजेंट करना है, दिस लिंक पार्ट. ओके, सो लिंक पार्ट को हम कैसे कंसिडर करेंगे, सो इट इज गिवन बाय struct node and इट इज what kind of लिंक इट इज. अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक एक्चुअली में है क्या, तो लिंक क्या है, एक पॉइंटर है. ठीक है. तो पॉइंटर कैसे रिप्रेजेंट होता है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ पॉइंटर. सो इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इन द स्ट्रक्ट नोड, सो दिस पॉइंटर, ये पॉइंटर हमें कहाँ लेके जा रहा है, एक अलग नोड की तरफ लेके जा रहा है. करेक्ट है. ये पॉइंटर हमें कहाँ लेके जा रहा है, एक डिफरेंट नोड की तरफ लेके जा रहा है. तो जब ये पॉइंटर डिफरेंट नोड की तरफ लेके जा रहा है तो वी कैन रिप्रेजेंट समथिंग लाइक व्हाट, स्टार लिंक. ओके. सो व्हाई वी हैव यूज्ड दिस सिंबल, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ न्यू नोड, एक नए नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, अ जनरल सिंटेक्स. ओके, it is a general syntax. We will close this. So this is what a creation of a node. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम नोड तो क्रिएट कर रहे हैं पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेड कैसे इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है. तो हमेशा हेड के लिए क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है हमें. सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेट करते हैं. तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमें एक एक नोड अगर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू 45 है, लेट्स से वी हैव अ नोड एंड हमें उसकी वैल्यू 45 क्रिएट करनी है, तो हाउ कैन वी डू दैट. So initially, what we can write? So if I have to write in the main program like int main, so struct node that points to the head, and head is none.
लेट्स से वी हैव क्रिएटेड नल, ओके। सो यहाँ पे हेड का नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये हेड को नल क्यों रिप्रेजेंट किया, अभी हम एक मेन प्रोग्राम देखेंगे जहां पे हम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हैं। तो लेट्स से struct node head is equals to null. Now head is pointing to, we have to allocate memory for the head. Definitely this memory head should be created for here. So here this head memory should be created. तो यहाँ पे head को हम क्या करेंगे, struct node. So this is also a node which consists of only the pointer part. Okay, starting address. So head को हम क्या करेंगे, we have a structure struct node and this node, and in this we need to allocate memory. तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग malloc फंक्शन, ओके। सो malloc फंक्शन यूज किया और वी हैव टू डिफाइन द साइज, ओके। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ malloc, ये malloc का बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। तो struct struct node and we need to close this, okay। So after that, this head is created and we have allocated some function, okay। So we have allocated the memory, okay। So अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो इन दो लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हमें क्या निकल के आएगा, तो we have created one node memory allocated and that name is what, head, and initially we have initialized with what, null वैल्यू से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हेड का डेटा पार्ट, head का data part. So if we say head data, okay, head का data, तो head का क्या है, एक तरह का पॉइंटर है, हमने ये पॉइंटर क्रिएट किया। अब head का डेटा क्या होगा, हेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1000 है। 1000 क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है, तो इस एड्रेस पे हम देख सकते हैं कौन सा डेटा प्रेजेंट है, 45, ओके। सो वी कैन राइट हियर हेड डेटा, ओके, हेड डेटा is equals to what, 45, okay। Can we write like this, yes। So head का डेटा हमने क्या राइट किया यहाँ पे, 45, okay। So after that what we can do, head का link, we can write here head link। So what is the meaning of this head link, see, सबसे पहला हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड इट इज पॉइंटिंग, एंड हेड का लिंक पार्ट, सो वी नो one is data and another one is what, link, okay। so लिंक मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो हेड के लिंक को हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, लेट्स से नल इनिशियलाइज किया। हम कोई भी अभी फर्दर अब मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम 45 को एक ऐसा एक नोड क्रिएट करके देना चाहते हैं जो पॉइंट करे 45 को। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि 45 हो और उसका नल हो, उसका लिंक पार्ट क्या हो, नल हो, और ये क्या हो, बेसिक एड्रेस असाइन हो। लेट्स से एड्रेस क्या है यहाँ, 1000, और ये 1000 किसके अंदर स्टोर हो, हेड पॉइंटर की, ठीक है। ये 1000 कहाँ स्टोर हो, इस हेड पॉइंटर में स्टोर हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हम एक नोड को अगर देखें सिंगली लिंक लिस्ट में तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास हेड लिंक को हम नल असाइन कर रहे हैं, मतलब किस पार्ट को असाइन कर रहे हैं, इस नल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स से वी हैव टू प्रिंट स्टेटमेंट, printf, and this is %d and head is pointing to data, ठीक है। सो एट हेड पोजीशन, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है, उसको रिटर्न दे देगा, ठीक है, दैट रिटर्न। सो वी कैन राइट हियर व्हाट, रिटर्न। सो विल क्लोज। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो, ये क्या है, एक कंप्लीट सिनेरियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट नोड, एंड आफ्टर ऑल we are initially implementing the 45, that 45 is a first data item and initializing with null, ठीक है। अब हम इस पर फर्दर मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, इसके लिंक को ऐड कर सकते हैं, इसके फर्दर क्रिएशन हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अ इनिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोड, ओके। So for this singly linked list, how we have created? So हम क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, कि how to create the node and what is the structure of linked list, and साथ ही साथ हमने क्या देखा यहाँ पे, एक नोड का हेड कैसे वर्क करता है, हेड का मतलब क्या होता है, और how to define to create a single node, okay, single node, okay।
So this is what complete representation. This is what complete representation of what creating a single node. ठीक है. और node को हम और भी क्या कहते हैं? Node is also called as self-referential structure. Node is self-referential structure in C. Structure in सी. ठीक है. तो ये सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर हो गया. तो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह नोट क्रिएट होता है. नोट क्रिएशन के बाद हमने क्या देखा, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक हाउ टू क्रिएट दैट नोट एंड व्हाट इज हाउ टू डिफाइन दोस थिंग्स. तो यहाँ पे कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं. यहाँ पे लेट्स से, so this data type represent what type of data, that is the member one type, which type of data, whether it is floating, whether it is an integer. Okay, so we define like that. And struct node क्या हो गया, link part. ये link क्या है, एक तरह का pointer work करेगा जिसमें हम address स्टोर करते हैं. So this is it guys, and I think I hope आपको ये सेशन समझ में आया होगा. आई थिंक आपको नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. साथ ही साथ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक सिंगली लिंक के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. So those students who are preparing for GATE 2025, they can join our batch. Our batch has already started. So definitely this is a good time to start. Okay. So filling form is not enough. आपको प्रिपरेशन भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, सो दैट कि एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके. So here in this engineer careers group, we will teach you the complete syllabus along with weekly and monthly tests and along with mock tests also. And we will provide a complete guidance how to study, in what pattern you need to study. So everything will be guided here. And अगर किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे कोई 1-to-1 सेशन चाहिए, you want to consult with us, feel free to contact with us. Okay. So thank you so much, student, for watching this, and I'll see you in the next session with some interesting topics and interesting thing to discuss in the computer science department and related subjects topic. Okay. So thank you so much. Thank you so much, guys.